मैं आपको बता दूं ये आफ्टर वॉश का रिजल्ट है, वॉश धोने के बाद का रिजल्ट है। तो उम्मीद नहीं थी कि ठीक हो पाएंगे। आई वाज एक्चुअली थिंकिंग कि मैं बॉयकट करा लूं, बट थैंक्स टू बी स्क्वायर सैलून। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर सैलून। दिव्या मैम आई हैं। दिव्या मैम विकास हमारे सैलून से 4-5 किलोमीटर मैक्सिमम पड़ता होगा, दूर है। तो मैम ने कहीं से ऐश कलर के चक्कर में ये बालों का हाल देख रहे हैं कैसा हो गया है। देखिए बिल्कुल ही डैमेज बर्न आउट हो गया। अब मैंने बोला था हेयर रिपेयर थेरेपी आपके जले हुए बालों को डैमेज केमिकली हो या फिर नॉर्मली डैमेज हो, कैसे भी डैमेज हो उसको रिपेयर कर देती है। कुछ हर बार 2 सीटिंग भी लगती है, कभी 3 सीटिंग भी लगती है। तो ये हेयर को हम रिपेयर करने वाले हैं बाय द हेयर रिपेयर थेरेपी। ओके, देखिए कैसा रिजल्ट आता है। पहले कुछ एक्सपीरियंस जान लेते हैं दिव्या मैम से। बताइए मैम, कुछ एक्सपीरियंस कैसे हो गया था, कुछ क्या हुआ था सैलून में? बेसिकली आई थिंक दे यूज्ड अ लॉट ऑफ ब्लीच, तो ब्लीच ज़्यादा कर दिया था एंड माय एंटायर हेयर इज बर्न्ड आउट नाउ। इट्स 100% डेड। सो आई जस्ट कम हियर विद अ लॉट ऑफ होप एंड आई एम विशिंग टू गेट सम गुड ट्रीटमेंट। ओके, कहाँ से आपको पता चला, कैसे मतलब पता चला फीस के बारे में? So basically I was googling out at night which place to go to. I was very stressed and I just googled best place to go for chemically damaged hair treatment and then I was suggested this place. So I mean it was Google, Instagram, YouTube, all the channels. आपने देख लिया कैसे हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि हेयर रिपेयर थेरेपी केमिकली डैमेज और नेचुरली डैमेज दोनों पर वर्क करता है। अब ये केमिकली में भी कौन सा डैमेज है? ये कलर फ्री लाइटर डैमेज है। एक होता है दूसरा वाला केमिकल, 2 टाइप के केमिकल हो गए ना। एक तो कलर वाला भी केमिकल हो गया, एक रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग वाला टाइप से भी काफी बार आपसे हेयर जल जाते हैं। देखते ना, स्मूथनिंग कराने के बाद बाल सिंक हो जाता है, तो वो भी जला होता है, वो भी केमिकल है, ये भी केमिकल है। ये फ्री लाइट ऐश कलर के चक्कर में ये हालत हो गई मैडम की। हाँ, नेचुरली डैमेज एक सीटिंग में ठीक होता है, केमिकली डैमेज के लिए 2-3 सीटिंग लग जाती है। ठीक है, अभी देखेंगे कैसा होता है स्टेप टू स्टेप। ओके, थैंक यू।
frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I like to be away in my patience. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I wish I knew. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. सो गाइस हेयर रिपेयर थेरेपी का प्रोसेस पूरा हो गया। मैम के बाल आपने देखे थे इससे पहले कैसे जले हुए थे। और मैं आपको बता दूं ये आफ्टर वॉश का रिजल्ट है, वॉश धोने के बाद का रिजल्ट है। इस पे कोई प्रेसिंग नहीं करी गई है। मैम से पूछ लो, मैम प्रेसिंग करिए अपने इस पे धोने के बाद? जी नहीं। तो कैसा लग रहा है आपको ये वॉश के बाद? आपके जो जले हुए बिल्कुल डैमेज हेयर थे अब ऐसी कंडीशन में आ गए सिंगल सीटिंग के अंदर, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरे बाल 100% जले हुए थे और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि ये ठीक हो पाएंगे। आई वाज एक्चुअली थिंकिंग कि मैं बॉयकट करा लूँ, बट थैंक्स टू बी स्क्वायर Salon, दिस वाज लाइक अबाउट 50-60% repaired with one sitting. We have devised a strategy for 100 days and I'm very sure that it will only get better. So thank you so much. बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे बाल 50-60% रिपेयर हो गए और 100% रिपेयर हो जाएंगे 100 दिनों में। थैंक यू सो मच पी स्क्वायर सैलून।